Another year, the same fight to breathe in Delhi. Air pollution, smog and haze back to haunt the national capital just in time for the festive season, with air quality plummeting. The ruling Aam Aadmi Party, which imposed penalty and jail term for the common man for bursting cracker, finds itself being accused of hypocrisy, with the BJP tweeting images of Aam Aadmi Party worker bursting crackers for new minister in Arvind Kejriwal government, R.K. Anand. The BJP called it anti-Hindu stand of Aam Aadmi Party government. आज अरविंद केजरीवाल ये बताएं कि क्यों उन्होंने दशहरे पे पटाखों पर पाबंदी लगाई थी, क्यों उन्होंने दुर्गा पूजा विसर्जन पे पाबंदी लगाई थी यमुना जी में, क्यों उन्होंने छठ पूजा में यमुना जी में पाबंदी लगाई थी। सिर्फ हिंदुओं त्योहारों से अरविंद केजरीवाल को नफरत क्यों है? The AQI, the air quality index in Delhi, is continuously falling. It is going from bad to worse. But instead of taking action on the real causes of pollution, the ban is put on crackers being burst by Hindus during Diwali, which has not been shown as a major cause of pollution by most scientific and other reports. The Kejriwal government says jailing those bursting crackers on Diwali will help improve Delhi's air quality. कहीं भी पटाखा जलता है तो वो गैर कानूनी है। उसको जो है जलाने पर जो आईपीसी की धारा है 268 उसके तहत ये कार्रवाई करेंगे, जिसमें 200 रुपए का जुर्माना है और 6 महीने तक का जेल का प्रावधान है। The BJP claims that cracker ban by Aam Aadmi Party government is aimed at its own vested interests. ग्रीन क्रैकर्स अलाउ होने चाहिए थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपनी कमियों की वजह से ये काम आज दिल्ली की जनता को उनको उठाना पड़ रहा है। हमारे त्योहार पर अगर कोई क्रैकर्स छुड़ाए जाते हैं, ग्रीन पटाखे जो अलाउ हैं उनको अलाउ करना चाहिए दिल्ली सरकार को। The Supreme Court meanwhile refused reprieve in cracker ban, advising Diwali revelers to use money for crackers to buy sweets instead. Bureau Report, India Today. All right, viewers, let's cut across to our panelists this evening. We are 3 days away from Diwali and fireworks when it comes down politically between BJP and the Aam Aadmi Party government. What does the BJP say? It's called the Aam Aadmi Party anti-Hindu, and it's also called out the hypocrisy of the Aam Aadmi Party, saying you violated your own ban. Yesterday, when you were welcoming a new minister, the cadre of the Aam Aadmi Party burst crackers. On the other hand, what does the Aam Aadmi Party say? We're going to cut across to a reporter and get you the latest from there. But let me introduce you to our panel this evening. Vijendra Gupta, Bharatiya Janata Party MLA, joins me. Akil Khan, Aam Aadmi Party supporters in the studio with me. Vimlendu Jha is an environmentalist, because all of this, viewers, has a direct impact on the citizens of those who live in the NCR region. The air quality already extremely poor. But I want to cut across to my colleague Akshay Dongre first to get a larger understanding on what exactly went down. Akshay, break it down for us. Now, there's a grave charge on the Aam Aadmi Party, which has stuck with the ban of even green crackers, especially during Diwali celebrations in the national capital. Did yesterday, when the Aam Aadmi Party welcomed their new minister, the cadre of the Aam Aadmi Party violate its own ban? Did it happen? Because for that, the party is answerable. Well, absolutely, Preeti. In fact, the videos are very, very clear that when the celebration was going on outside the residence of the new minister of the Aam Aadmi Party, the workers were in fact celebrating by bursting the firecrackers. Now, that is a problematic thing in two ways. First of all, the air quality is deteriorating. It is in poor category. In fact, it has been deteriorating for the past 2 weeks. And now, with the situation going from bad to worse, the Aam Aadmi Party that is in the government has in fact always batted for reducing air pollution. But when the minister, when a new member is joining as far as the ministerial berth is concerned, similar kind of violations are taking place that shouldn't have been taking place in the first place. Second thing is that when it comes to Diwali, the Aam Aadmi Party has been very clear, and it has in fact received backlash from the traders community, especially those dealing in firecrackers, that the Aam Aadmi Party has taken, or rather the Delhi government has taken a lot of people's
jobs as far as the business is concerned. Now, when there is violation going on by the similar party, it has given a lot of ammunition to the Bharatiya Janata Party to say that... The Aam Aadmi Party, what does the Aam Aadmi Party, Akshay, has to say, especially of violating the own ban that it stands by? Has any official word come in on this video? Well, not as such, not as such. Clearly the Aam Aadmi Party is on defensive. There has something that has clearly gone wrong as far as these videos are concerned, as far as these celebrations are concerned. And now the party is on back foot because with the air quality going bad, all of the talks that has been coming in from the Aam Aadmi Party, it seems that the party itself is not walking the talk. Especially now, there will be two problems for the Aam Aadmi Party. Earlier, when the air quality used to deteriorate, the Aam Aadmi Party has historically blamed the Punjab government, but now the party is in power in both the states. While some measures are being implemented in Punjab as far as stopping the burning of stubble is concerned, it will be answerable as far as the issues of firecrackers are concerned, the issues of stubble burning are concerned, and now there will be no excuse as far as the Aam Aadmi Party in terms of air pollution is there. All right, appreciate you joining us, Akshay. Thank you. I have Vijendra Gupta from the BJP, Akil Khan and Vimlendu Jha. Akil Khan, you're an Aam Aadmi Party supporter. आप support करते हैं आम आदमी पार्टी को. आपको क्यों लगता है कि उन्होंने अभी तक कोई रिएक्शन ही नहीं दिया है? क्योंकि एक वीडियो जो बीजेपी ने वायरल कर दिया है अभी कि कल उनके मंत्री नया मंत्री बना और वेलकम में पटाखे चलाए गए. जो स्टैंड आम आदमी पार्टी बड़ी पब्लिकली ले रही है कि हमने बैन किया है क्रैकर क्योंकि एयर पोल्यूशन को ऐड करता है, वही बैन उन्होंने वायलेट किया है. You see, madam, if you are, you just recall the previous preventions for this pollution control activities, we have been successful. That we have reduced 25% of नहीं, आप इस वीडियो के बारे में बात करिएगा ना अखिल जी. You have to see the credibility of this. I'm not sure that this is done by any Aam Aadmi Party. It should be ensured whether, because the BJP's strategy is always there to just malign Aam Aadmi Party by doing intentionally something wrong. So I will not approve of this, that this is done by Aam Aadmi Party. Second thing is that in Delhi, there is no anti-Hindu thing, because during this winter season only this kind of problem comes and it becomes very severe. So health of the Delhi people are most important, and and then only we can make some other kind of celebration. तो आप कह रहे हैं कि ये आप कह रहे हैं अकील खान जी कि ये जो पटाखे चलाए गए, ये जो ये दिख भी रहा है आपको वीडियो में कि ये आम आदमी पार्टी के लोग नहीं है. No, I don't विजेंद्र गुप्ता, I don't agree on this. चलिए, because the BJP's strategy is always there. They are just making hue and cry necessarily, विजेंद्र and गुप्ता they are not having any kind of, because central government is controlled by BJP. What they are doing for pollution control, they have not done anything. And I tell you, Mr. Javadekar, I tell you one thing, Mr. Javadekar, who has told that 20 crore rupees has been assigned for the parali burning prevention, but he has not done anything. चलिए अब उस पे आएंगे. ठीक है सर, उस पे आएंगे. विजेंद्र गुप्ता सर, ठीक है, उस पे आएंगे. विजेंद्र उस पे आएंगे सर, आएंगे. अच्छा, ठीक है. विजेंद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत क्या है कि एक के क्रैकर बैन है या प्रॉब्लम है कि आम आदमी पार्टी ने अपना खुद का जो बैन है वो वायलेट किया? देखिए, मैं एक तो पहले प्रीति जी आपको बताना चाहता हूं कि आज इतनी इम्पोर्टेंट डिबेट आपके चैनल पर हो रही है और आम आदमी पार्टी का कोई ऑफिशियल प्रवक्ता यहां पर नहीं आया है. इससे आप समझ लीजिए कि वो इशू से भाग रहे हैं. उनके एक न्यूली अपॉइंटेड मिनिस्टर अपने घर के बाहर पटाखे चलाते हैं, जबकि पटाखा बैंड है नहीं, अवेलेबल नहीं है मार्केट में. वो कहां से लाए? और जब वो खुद पटाखे चलाते हैं तो पॉल्यूशन नहीं हो रहा है. इशू ये है कि पूरा साल आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही. दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है. पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई और जिस तरह से पॉल्यूशन हो रहा है और जिस तरह से
अब वो इस इशू पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पहले वो पंजाब की गवर्नमेंट को ब्लेम करते थे, कभी सेंटर को ब्लेम करते थे, लेकिन आज जब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो क्या सिर्फ क्रैकर्स रोककर पॉल्यूशन को कम करेंगे तो क्या ये एश्योरेंस होगी कि पॉल्यूशन फिर कम ही रहेगा? और अगर क्रैकर्स रोकने के बावजूद भी पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा है। को इस कॉन्वर्सेशन में लेके जाऊंगी, क्योंकि अगर आप देखें पिछली दिवाली क्या हुआ था कि पटाखे चले और फिर अगले दिन, अगले 3 दिन तक जो पोल्यूशन लेवल था वो बद से बदतर, उसके भी नीचे अगर कुछ टर्म होता है उतना था। तो हम ये तो मान सकते हैं कि पटाखों का पोल्यूशन होता है, चाहे पराली के जितना ना हो पर होता है। विजेंद्र गुप्ता जी, देखिए, मैं आपको इतना कहूंगा कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का एक्सक्यूज है, बहाना है, लेकिन अल्टीमेटली नहीं है ना, आपने तो गलत नहीं दिखाते, हम सारे फिगर दिखा देंगे आपको। नहीं, मेरा ये कहना है कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, मैं आप दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं, हम सब लोग दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इंडिया में, वर्ल्ड में अगर कहेंगे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप उसको सिर्फ बहाना बना के आप ये बताइए कि आपने क्या क्या कदम उठाए अभी तक। सिर्फ आप पटाखे रोक रहे हैं, उसके पीछे एक ही लॉजिक है, ये बताना चाहते हैं पॉल्यूशन को रोकने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। हम उसको एग्री करते हैं, लेकिन पॉल्यूशन रुके तो सही, पॉल्यूशन कम तो हो, लोगों को रिलीफ तो मिले। एक सेकंड में दूसरे गेस्ट को ले आती हूँ। और खुद पटाखे चला रहे हैं, वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई किया था? आई वांट टू ब्रिंग इन गुप्ता साहब, बताइए क्या कार्रवाई हमारे साथ आप बने रहिए। I want to bring in Vimlendu Jha into this conversation. Vimlendu Jha, I want you to tell our viewers, in terms of crackers, how much do they add to pollution when it comes down year on year, especially in the national capital, because we saw what happened last year. There seems to be an attempt to inform people by a certain set that crackers really don't impact the pollution of the NCR region, like say stubble burning or vehicular traffic, which could be correct to a certain limit, but what is the impact of crackers in the capacity that they are burnt in the NCR region during Diwali? Preeti, first of all, we need to understand that Delhi's air, which is already very, very bad. We've seen last 5 days, Delhi's air quality in several areas has been around 400, 450. In Anand Vihar, it's around 500, 550. When the situation is already bad, firecrackers make the situation worse. We all know, and this is what the medical fraternity and WHO and everyone else has told us, that the air quality index on the night of Diwali and the morning after is 30 times worse than the permissible limits. We all know, our doctors have told us that the ICUs or the hospitals of our of Delhi run out of ICU beds next day because of Diwali and because of firecrackers. So we need to understand that whether it is pro-Hindu, anti-Hindu, I am not sure. This is against people. The debate should be about pro-people and anti-people. You know, I do not understand the sensitivity of Mr. Gupta when he talks about his sentiments towards faith, but sentiments towards children. Every third child is asthmatic. Every third child is actually, has some sort of a breathing disorder and things. So, of course, overall 2 to 3% pollution, but if all the firecrackers are concentrated in these days of Diwali or Christmas or Guru Parab, and by the way, the Supreme Court put a ban on firecrackers, and the petition was filed by 3 children for their right to breathe, and this ban is across the faith groups, by the way. On Christmas you can't, on 31st of December you can't, on Guru Parab you can't, and on Diwali you can't. So I think it's a collective failure. It's so sad. You know, I've been doing shows all day today. Not a single person from Aam Aadmi Party officially has actually participated in any of the debates. This year, they do not have anyone to blame in Punjab. We all saw that the billboards talked about, हमने अपना काम कर लिया है, पराली जला करके सारी हवा खराब कर दी गई है. So I think central government, which is not serious, because also the pollution is not just in Delhi. This is North India, and half of North India or more of it is actually controlled by Bharatiya Janata Party. Delhi government, Aam Aadmi Party, central government, they all have completely failed, and it's such sham that we hear our political class come and talk about sensitivity when 1.5 million people die. Mr. Gupta, your MCD is burning garbage which contributes to 10 to 15%.
and Aam Aadmi Party hasn't got us public transport, chops and cuts full-grown trees every hour. So it is everyone, Hamam mein sab nange hain, and they wake up in the month of October, keep blaming each other and make a fool out of the citizenry, and the children suffer, elderly suffer, pregnant women suffer. True, I agree with you. Ultimately, the collateral is the citizens of the NCR region. जी अकील खान साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए एक्शन जो हमने लिए, प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो अपोज, आई डोंट नो व्हाई बीजेपी अपोजिंग. लास्ट टाइम आल्सो वी हैव टेकन ऑड इवन दे आर स्टार्टेड अपोजिंग बिकॉज ऑड इवन 50% रिडक्शन इन डायरेक्ट pollution by the vehicle, and now we are taking all kind of action like electric vehicles. We are in the full force, and we have done very good job in putting these EV electronic vehicles, these charging stations, and we are doing our best. And this crackers issue, you see, it is you take everything on religious issues. You see, this is the first of all, the health of the people of Delhi is most important, and children are also most vulnerable because of this winter season. It is the biggest problem, and you see what you are doing in NCR. BJP is there; they are not doing in NCR. NCR, you will find very poor quality this time. And so many kind of diseases are coming up because of this pollution. विजेंद्र गुप्ता जी, the fact is, देखिए अगर आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इससे अपना पल्ला झाड़ रही है, मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी इससे अपना पल्ला झाड़ रही है और वो कुछ नहीं बोलना चाह रही है. देखिए अगर एनसीआर रीजन की बात आती है तो मान लिया पंजाब में पराली जलाई जाती है, उसकी हमने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट की है, हम ये सवाल पूछेंगे आम आदमी पार्टी से. पर एनसीआर रीजन में हरियाणा भी आता है, उसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, उसमें जो पोल्यूशन इन दोनों स्टेट से आता है वो अलग आता है. आपसे पूछते हैं विजेंद्र गुप्ता जी कि इसमें आप एक बेसिक क्रैकर बैन को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा क्यों बना रहे हैं सर? ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिवाली पे बैन है, ईद पर भी उतना ही बैन है जितना दिवाली पर भी बैन है, क्रिसमस पर भी उतना ही बैन है जितना दिवाली पर ही बैन है. तो इसको हमने एम्ब्रेस नहीं करना चाहिए, चाहे थोड़ी पोल्यूशन कम करें, पर कुछ तो कर रहे हैं हम. न्यू ईयर भी बैन है. बोलिए बोलिए सर. नहीं, मैं इतना कहूंगा कि ये आई वॉश है. इस आई वॉश से कुछ पॉल्यूशन कम होने वाला नहीं है. जब तक कोई डिटर्मिनेशन नहीं होगा गवर्नमेंट की तरफ से, एक कमिटमेंट नहीं होगी, एक रोड मैप नहीं होगा, दीजिए प्लीज, आप इंटरप्ट मत करिए. थ्रू आउट द ईयर कोई प्लान नहीं होगा. एक मिनट, बोलिए थ्रू आउट द ईयर कोई प्लान नहीं होगा, तब तक क्या दिल्ली गवर्नमेंट के, क्योंकि ये कंप्लीट 100% दिल्ली गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, ये कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है किसी का, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है. दिल्ली गवर्नमेंट ये अपने फैसले खुद ले सकती है, असेंबली में लॉ बना सकती है, सब कुछ कर सकते हैं. उन्होंने क्रैकर्स भी बैन किए हैं, जो क्रैकर्स बैन कर सकते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं. मेरा ये कहना है कि दिल्ली क्रैकर का बैन वैसे दिल्ली गवर्नमेंट से नहीं आया है, दिल्ली की यमुना मोस्ट गुप्ता साहब, पॉल्यूटेड है. क्रैकर का बैन वैसे आपको भी पता है सर, गवर्नमेंट से तो नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट से आया है ना. सुप्रीम कोर्ट भी अभी एक याचिका दर्ज हुई है, प्ली और दर्ज हुई है, आप ही के पार्टी ने दर्ज की है कि क्रैकर से बैन हटाएं. वो कह रहे हैं हम नहीं सुन रहे हैं प्ली. देखिए मैं कहिए सर, कहिए. एक मिनट, मैं इतना कहूंगा कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है या जो पॉलिटिकल पार्टी है पावर में, वो डिबेट पे क्यों नहीं आना चाहते? वो इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं देना चाहते? वो क्यों नहीं इस पर कोई आर्गुमेंट फेस करना चाहते हैं? सर सही, ये सवाल सही है. एक सेकंड सर, ये सवाल आपने सही बोला है. हर पॉलिटिकल पार्टी इससे अपना पल्ला झाड़ना चाह रही है और आम आदमी पार्टी को डिबेट पे आना चाहिए था, रिस्पॉन्ड करना चाहिए था. विमलेंदु झा, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम. मैं आपने मुझे कॉल किया, मैं यहाँ पर आया हूँ. मैं एक बात बोलूं और आपसे मैं वक्त नहीं है मेरे पास. चलिए मैं एक लास्ट, मैं आज 12 ईयर से हूँ और मैं अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ हूँ. नहीं सर, ये आप बोलेंगे आम आदमी पार्टी का Vimalendu Jha into this conversation. I just want to cut across to Vimalendu Jha for a final word on this. Vimalendu, ultimately the collateral is paid by the citizens of the national capital. How do you see things change at all, or we are going from worse to worse, because nothing seems to be changing on ground? It's going to get worse, Preeti. Unfortunately, the stubble burning that was actually postponed because of rains, it's all going to come back to us in 1 week. So it's going to be more and more intense. The weather is going to get bad. Stubble burning is going to increase. So unfortunately, the situation is going to be really, really
difficult for the citizens. And right now with post-COVID, we're talking about our breathing capacity, our lung capacity. We are anyway so vulnerable. Things are very, very big. Wish our political class understood the seriousness of the situation, understood that this is about public health. This is about our children, their mortality and morbidity, and should have addressed this just for the sake of the children. Forget politics, forget politicking. Well, I agree with you. Forget politics, forget politicking, but that's an ominous warning coming in. We are 3 days away from Diwali. Pollution levels are completely at the worst right now. Let's see what happens on the day after. Thank you all for joining us.